Hello students, welcome to my class. Today we are going to study a beautiful poem, a photograph from class 11th textbook reader Hornbill. This poem has been composed by Shirley Toulson, and this poem is a tribute to her mother who is no more in this world. Now let's get an idea about the poem. Shirley Toulson has raised a sensitive theme in this poem. The poet watches a photograph of her mother's childhood when she went on a sea holiday. A photograph is a treasure that cherishes unforgettable memories forever. Here we need to understand this, that a photograph has the ability to revive and relive a number of memories that are associated with the particular moment of our life. Whenever something good is happening, whenever there is a celebration, whenever we feel happy, we like to take photograph and cherish that moment for a longer period of life, because as soon as we get to see this photograph at any point of our life, all the memories related to that particular moment gets revived. तो एक फोटोग्राफ में एबिलिटी होती है कि वो सालों तक आपकी उस मेमोरीज को सुरक्षित करके रख सकता है. तो यहाँ जब पोइट इस अपनी मदर के फोटोग्राफ को देखती है तो उससे रिलेटेड वो सारी बातें उसको याद आ जाती हैं. Next, the most important thing about this poem is the poem depicts the three stages of human life: childhood, middle age, and death. This is the very beautiful fact about this poem, that within the limited lines the poet has described how our attitude towards a particular thing changes with the passage of time, and our feelings are completely different from phase to phase. So now let's move on to the text. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. So the poet is sitting somewhere relaxed in her home, and she is watching at a photograph that has been framed in a wooden cardboard, and this wooden cardboard has been used to secure that photograph for a longer period of life. So जब वो देखती है उस कार्डबोर्ड में लगे हुए उस फोटोग्राफ को, उसको याद आ जाता है. शी कैन हैव एन आइडिया, शी कैन रीलिव दैट मोमेंट व्हेन द टू गर्ल कजन्स हैड गोन ऑन अ सी हॉलीडे. जब वो दो लड़कियां जो कजन्स थीं वो एक सी हॉलीडे पे गए थे. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. Cousins were two, but both of them were holding the hand of a third girl, and this third girl who was the mother of the poet, and she, the big girl, some 12 years or so. Mother's poet was the eldest of those three girls, and she was about 12 years at that time. All three stood still to smile through their hair, because this moment of sea holiday was a long celebrated time for them. Maybe they had planned for this picnic for a long time, so they are very happy and they are smiling, and their hair are flying because of the windy एटमॉस्फेयर. तो वो समंदर पे जब गई हैं, उस वाटर बॉडी पे जहाँ पे भी वो गई हुई हैं, वहाँ पर उनकी वो स्माइल कर रही हैं और स्टिल खड़ी हुई हैं. उनके बाल जो हैं वो उड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द विंड. दैट मीन्स दैट दे आर पोजिंग टुवर्ड्स द कैमरा. स्टिल खड़े होके स्माइल दे के और उनके उड़ते हुए बालों के साथ दीज थ्री गर्ल्स आर पोजिंग टू द कैमरा at the uncle with the camera, and maybe their uncle is there with the camera to take the photograph. So all this idea is coming to the mind of the poet just by looking at that photograph. और यही होता है हमारे साथ भी जब हम किसी फोटोग्राफ को देखते हैं. तो क्या सिचुएशन थी उस समय, क्या चल रहा था हमारे मन में, कौन कौन हमारे साथ था, किस किस के उस समय क्या क्या
फीलिंग्स आ रहे थे, कौन कौन कैसे उनको एक्सप्रेस कर रहा था, फोटोग्राफ कौन ले रहा था, ये सारी बातें एक फोटोग्राफ देखते ही रिलीव हो जाती हैं हमारे माइंड में। ऐसा ही पोइट के साथ हो रहा है। A sweet face, my mother's. Now her glance is fixed at the face of her mother, and she feels like every other daughter in the world that her mother's face is the sweetest of all. For a daughter, the mother's face is most beautiful of all. तो ये लड़की भी जब उसको देखती है और कहती है कि this was the time before I was born. My mother was only 12 years old then. I was not born in the world, but even then I could feel that my mother was having the most beautiful face in the world. And the sea, which appears to have changed less, watched their terribly transient feet. And here a very contradictory image has been picked by the poet. कैसे? पोइट कहती है कि ये जो सी है, समंदर जो है, SEA, it appears to have changed less, though a fair amount of period has passed since the time the photograph was taken. आज जब वो उस फोटोग्राफ को देख रही है, तब से लेके अब तक कई सारे साल जो हैं वो गुजर चुके हैं, लेकिन ये समंदर जो है इट हैज चेंज्ड लेस, ये बिल्कुल भी नहीं बदला है. एंड इट वॉज वॉशिंग देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. द गर्ल्स वर वेरी स्मॉल दैन, देयर फीट वर वेरी स्मॉल दैन, एंड सिंस दैट टाइम लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव गॉट थ्रू चेंजेस, लेकिन समंदर जो है उसमें शायद कोई भी चेंजेस नहीं आया है. हियर द पोएट वॉन्ट्स अस टू कन्वे अ मैसेज दैट इन कंपैरिजन टू द वर्ल्डली फिनोमिना द नेचुरल फिनोमिना अंडरगो अ लिटिल चेंज. वो चेंजेस अगर होते भी हैं तो वो इतने एविडेंट नहीं होते कि वो हमारी नज़र में आ जाए. तो यहाँ एक कंपैरिजन है बिटवीन द changing nature of the world, of the worldly things, and the changing nature and the unchanging nature of the natural phenomena. So let's move on to the next part, that is the word meaning that have been covered through these lines. The first word is cardboard. Here cardboard is not a piece of wood, it is a photograph. Next word is paddling. Here paddling has been used for an activity with a water body or a pool. Sweet here means beautiful. Still here means unmoved where there is no activity. Appears here means seems, महसूस होना या appear होना, दिखाई देना या लगना. Transient here means the temporary or a brief. Brief means small, that remains for a very small time, or temporary, for a limited period of time. So these are the word meanings from these lines. You can note them down according to your choice. And now let's take a look on the point that have been covered in the above lines which we have read earlier. और ये जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम इन जो पॉइंट जो दिए हुए हैं, ये वैल्यू पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हम एक रिवाइज कर सकते हैं उस एक्सप्लेनेशन को. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, पोइट्स मदर वेंट फॉर अ सी हॉलीडे विद हर टू कजिन्स बेटी एंड डॉली. बेटी एंड डॉली आर द नेम्स ऑफ अ कजिन at the age of 12, and she was 12 years old then. Their uncle had captured a photograph of this scene. पूरे scene जो है वहाँ का, उसका photograph uncle ने लिया है. The girls are smiling and looking beautiful because they are happy, they are smiling, they are beautiful. During this long tenure, एवरीथिंग एक्सेप्ट द सी हैज चेंज्ड. तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, लेकिन समंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है. नाउ यू आर सपोज टू गो थ्रू 1 marks question, and the first question is, what is the cardboard? So cardboard is the wooden frame in which a photo has been kept to preserve. What has the camera captured? The camera has captured the 3 girls who have gone on a sea holiday. What are the names of the cousins? The name of the cousins are Betty and Dolly. Who is taking the photograph? Their uncle is taking the photograph. What is peculiar about the sea? The sea has a
permanent nature. That means it changes it doesn't changes during the span of time. Now let's move on to the next lines of the text. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. Let's take this. उस फोटोग्राफ को लिए हुए अब 20-30 years हो चुके हैं. That means the mother is either 32 or 42 of age. इस 42 साल की उम्र पर जब मदर उस फोटो को देखती है, she would laugh at the snapshot. तो वो हंसती है. वो हंसती है because she loves that photograph. She misses the feeling that she used to have at the time when she went on that holiday. The pleasure she had felt at that time, the happiness that she had felt at that time, जो कि शायद अब 42 की एज में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बचपन में हम फ्री होते हैं सारे केयर्स से, सारे वरीज से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. अ पर्सन इज एबल टू एंजॉय द लाइफ टू द फुल. तो ये भी बहुत खुश थी उस फोटोग्राफ में और ये मिस करती है कि काश आज भी वो उतनी खुश हो पाती. और खुश होके उस फोटोग्राफ को देख के वो कहती है, सी बैटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. वो याद करती है, वो कहती है, लुक एट माई कजन्स. द नेम ऑफ द कजन्स आर बैटी एंड डॉली. शी सेज, लुक एट माई कजन्स, हाउ ब्यूटिफुल दे लुक. And now she comments on the dressings of the girls, and she wants to mention that they were dressed especially for this occasion. उनके पेरेंट्स ने उन लड़कियों को स्पेशली ड्रेसअप किया था इस सी हॉलीडे के लिए. और ये जो चीज़ें हैं, ये जो मेमोरीज हैं, ये मदर को बहुत ज़्यादा प्लेजर देती हैं, खुशी देती हैं. वो हंसती है, एक केयर फ्री लाफ, एक बहुत ही प्योर लाफ उस समय उसके अंदर से निकलती है. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर. इन दो लाइंस को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए. ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन इटसेल्फ. यहाँ ऐसे समझिए, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. यहाँ दो कैरेक्टर्स हैं, एक पोइट है और एक पोइट की मदर है. पोइट की मदर के लिए उसका सी हॉलीडे दैट हैज बीन कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ वॉज हर पास्ट. और उस फोटोग्राफ को देख के जो केयरफ्री हंसी, जो एक प्योर हंसी, एक प्योर प्लेजर उसकी मदर के मुंह से निकलता है, वो पोइट के लिए वो उसका पास्ट है. यानी यहाँ दो लोग हैं जिनका अपना अपना पास्ट है. पोइट के लिए उसकी मदर की खुशी पास्ट है और मदर के लिए उसका वो प्लेजर जो उसने उस हॉलीडे में फील किया था वो उसका पास्ट है. विद द लेबर्ड बोथ राय with the labored ease of loss, and here both of them are disappointed. The poet is disappointed, the poet's mother is disappointed. Why? Because both of them are suffering from the loss of their past. The mother has lost her childhood and the poet has lost that carefree look, that true happiness of her mother, because now the mother is no more in this world. तो दोनों ने ही अपने लाइफ में कुछ कुछ खोया है और दोनों ही उस लॉस को छिपाने के लिए they are trying to smile, they are trying to hide that loss and trying to show themselves relieved and happiness. वो ऐसा शो कर रही हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऐसा दिखाने के लिए उन्हें बहुत कोशिश करनी पड़ रही है. यहाँ एक लाइन है, with the labored ease of loss, यानी लेबर्ड भी है, यानी बहुत कोशिश करने पर, बहुत मेहनत करने पर, और ईज भी है जिसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही है. इसका ये मतलब है कि लॉस तो दोनों को हुआ है, मदर को भी हुआ है और पोइट को भी हुआ है, लेकिन दोनों ही बहुत कोशिश कर रही हैं सो दैट दे कैन हाइड दैट पेन फ्रॉम ईच अदर एंड शो देमसेल्व्स टू बी कंफर्टेबल एंड नॉर्मल. तो एक स्टेज ये गुजरती है. इसके बाद नाउ शी इज बीइंग डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड.
पहले स्टेंजा में हमने कवर किया था पोइट की मदर के चाइल्डहुड को, सेकंड स्टेंजा में हमने कवर किया पोइट की मदर के एडल्टहुड को यानी उसके मिडिल एज को, और इस लास्ट पोएम में नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट स्टेज ऑफ हर मदर्स लाइफ, दैट इज द death. And she says now she is being dead nearly as many years as that girl lived. In the photograph, the age of the mother was 12 years, and now 12 years have passed since the mother is no more in this world. And of the circumstances, there is nothing to say at all. Nobody in the world has guts to say or express his or her feeling after the loss of his or her mother. दुनिया में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो अपनी मदर के लॉस को डिस्क्राइब कर सके। और पोइट कहती है कि आज जब मुझे अपनी माँ को खोए हुए 12 साल हो गए हैं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं कैसा फील कर रही हूँ या मैं किस एक्सप्रेशन से किस फीलिंग्स को अंडरगो कर रही हूँ। आई हैव नथिंग टू से, I have no words to say. Its silence silences. The silence of my mother, because she is no more in this world, because she is no more here with me to express her feeling, to share her pleasure, to share her sorrows with me. Her silence has made me speechless. पोइट कहती है कि मेरी माँ की खामोशी ने मुझे और मेरे आसपास की हर चीज को भी खामोश कर दिया है। तो इसके साथ ही आपकी पोएम जो है वो लास्ट होती है। लेट्स मूव ऑन टू द वर्ड मीनिंग दैट हैज बीन अपीयर्ड इन दिस लास्ट लाइन्स। द फर्स्ट वर्ड इज अ स्नैपशॉट, दैट मीन्स द पिक्चर। ईज मीन्स द सिंप्लिसिटी, लेबर्ड मीन्स विद एफर्ट, circumstances means situation, silence means tranquility, tranquility means where there is no noise, शांत है सब कुछ। राय means disappointed, disappointed निराश होना, राय तकलीफ होना, dejected फील करना। So now let's once again let's understand the meanings of these lines with the help of these value points. The first is, after 20 or 30 years, the mother is equally delighted to see the photograph that I am mentioning from the starting of the poem, कि आप कितने भी साल बाद उस फोटोग्राफ को देखें जो आपके किसी पर्टिकुलर हैप्पीनेस से रिलेटेड है, it will give you the same pleasure as you experienced at that time. With the long passage of time, everything has changed. बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं समय के साथ। She misses the old beautiful days of her childhood. क्योंकि ये तो बताने की जरूरत नहीं है, childhood is the best period, that the golden period of everybody's life. हर इंसान अपनी लाइफ के इस फेज को कभी भी खोना नहीं चाहता और खोने के बाद लाइफ लॉन्ग उसको याद करते रहता है। तो पोइट भी की मदर भी जो है वो अपने ब्यूटीफुल डेज को याद कर रही है और उनके लिए लॉन्ग करती है। शी स्माइल्स टू रिलीव द पेन ऑफ द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड। ऑफ कोर्स शी हैज लॉस्ट हर चाइल्डहुड एंड ऑफ कोर्स इट इज मेकिंग हर एगनाइजिंग। It is very saddening that she has lost her childhood. बहुत दुख है उसको इस लॉस का, लेकिन she is smiling. She is trying to hide that pain from her daughter and even from herself. वो अपने आप को भी ये एहसास नहीं दिलाना चाहती है that she is going through this loss. She smiles to relieve the pain of the loss of her childhood. The poet as well as the mother have to make an effort to compensate the sense of loss. उस sense of loss को compensate करने के लिए poet को और उसकी mother को दोनों को ही बहुत कोशिश करनी पड़ रही है। Now the mother is dead and the poet is speechless to comment in any way about this. And in this last phase we find that the poet is not able to comment anything because now her mother is no more in this world and she is completely speechless to describe her feelings in these circumstances. So what does the mother laugh at?
the mother laughs at the photograph that was taken when she was 12 years old and she went on a sea holiday. What does the mother laughter indicate? Mother's laughter indicate that she was extremely happy at the time when the photograph was taken, and even today the photograph, the memory is able to give you that pleasure that she had felt at the time when the photograph was taken. The next question is, how many years have passed after the mother's death? It shows that the poem itself is evident that 12 years has passed after the mother's death. Why does the poet remain silent? The poet remains silent because now the mother is no more in this world. 12 years have passed after her death, and the poet is completely unable to express her sorrow, her grief of the loss of a mother. She remains speechless. And here you have to note that in the phrase labored is, oxymoron is used. Oxymoron is a figure of speech when you are asked 1 marks question. जब आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे किसी पर्टिकुलर लाइन में पोइटिक डिवाइस पूछ लिया जाता है. तो यहाँ जो फ्रेज है लेबर्ड इज, उसमें पोइटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरोन. आप इसे कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर दो अपोजिट्स एक साथ यूज किए गए हैं. लेबर्ड भी है और इज भी है. सो टू अपोजिट्स आर पुट टुगेदर. That's why the oxymoron poetic device has been used here.